स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने जो यहाँ पर सपोर्ट दिया है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी तरह से आप फ्यूचर में भी हमारे चैनल डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में आ जाए, इसकी वीडियोस को, लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि जो बाकी दूर दराज बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके लिए और एक टॉपिक हम रखेंगे, वो है हाउ टू रीच ए सक्सेसफुल चाइल्ड। क्योंकि हमारी डिमांड है, चाहे हम घर में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पर भी हम चाहते हैं कि, और इस पर रिसर्च बहुत ज़बरदस्त हुआ है चाइल्ड साइकोलॉजी पे, चाइल्ड एजुकेशन पे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो ये बच्चा होता है, हम चाहते हैं हर माँ बाप, हर पेरेंट चाहते हैं कि जो उसका बच्चा होता है वो चाहता है कि इस ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे हाउ टू रीच सक्सेसफुल चाइल्ड। किस तरह से हम एक बच्चे को एक कामयाबी की तरह ले सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करेंगे उस पर गौर फिक्र करेंगे और अपने कोशिश करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने बच्चों पे जो आपको घर में हैं, ताकि वो बच्चे अच्छे बन जाए, क्रिएटिव बन जाए, इंटेलिजेंट बन जाए, अच्छे बच्चे बन जाए। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है जो टॉपिक है, ये है, आप देख सकते हैं दैट इज़, मैंने आपको कंटेंट इसलिए रखा है कि आप यहाँ से फिर कोई पॉइंट्स लिख सकते हो और आप उसको ग्रास्प कर सकते हो। वन ऑफ द अमेजिंग थिंग दैट एनी वन लाइव कैन डू इट इज़ टू रेज अ चाइल्ड विच इज़ ऑल्सो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ये तो बहुत बड़ा काम होता है। इट इज़ अ ड्राइव ऑफ मेनी पेरेंट्स टू वॉच देयर किड्स out for them in their lives somehow, despite whether it is with an ability to develop patience or their own specific way of living. Children ought to have the capacity to combine what they learn from us, our life lessons, with the lessons they explore themselves and gather them to they succeed. To raise a successful child, we have to make a childhood that breeds success. What is the best about this is it does not cost you so much of money to spend to private school fees or in a lot of extracurricular activities. It needed with only a little time, some listening and a lot of talking. You can beat those things in most parts undoubtedly. तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारी फीस देनी है, बाकी चीज़ है तो वहाँ से डेवलप नहीं। ये यहाँ पर काम क्या करना है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, डेवलप हो जाए, अच्छे बने, तो ओनली यू हैव टू, आपको उनके लिए टाइम निकालना है, सम लिस्टिंग उनसे सुनना है, एंड लॉट ऑफ टॉकिंग, उनसे बातें करनी है। यू कैन बीट दोज थिंग्स इन मोस्ट अनडाउटली। तो इससे उन बच्चों में थोड़े बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से है, आप यहाँ से देखो व्हाट योर चाइल्ड डज नॉट। पहले अभी यहाँ पर सीखना है कि ये जो बच्चा हमारा है ये क्या नहीं चाहता है। व्हाट योर चाइल्ड डज नॉट, जो उसको पसंद नहीं है, एंड नीड टू बी सक्सीड, उसके लिए नीड टू सक्सीड। यहाँ पर सम, जो उसको ज़रूरी नहीं है उसकी सक्सेस के लिए। सम चिल्ड्रन हु हैव ग्रोन अप टू द सक्सेसफुल हैड often come across broken childhood. They may have been from a broken family, lived in a poverty, or just never fitted into the school. There are many variables that happen to our children that we have no control over. Also, these things, rather than being a negative impact, can pivot and turn out to be a piece of what makes successes for them. Shortly speaking, यहाँ पर है, being perfect is not required. Indulgence is likewise not a mandatory part to your child's success. Some children who experience childhood luxury have all their physical needs met, can't build up their cravings, they need to go out and make it all alone. तो ये इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पॉइंट है ये आप अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इस चीज़ें पैराग्राफ पे इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप इसको फोकस कर सकते हैं। They have no compelling reason to all goals and purposes they have already got. Some exceptionally rich individuals bring up their children modestly and simply to give them a motivation to make their own way to success. Your children does not need a helicopter parent. A helicopter parent is one who hovers around their child to avoid their child from facing failure or to ensure they are on their best behavior. यहाँ पर है, they are students who bring the most amazing science projects to the school, which are mainly done by the adults at home. Helicopter parents जो है prevent their children from seeing what they can do themselves, learning to enjoy their own independence because they are doing everything for them instead. ये वाला पैराग्राफ है, ये आप इसमें पेज में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें है, अगर हम देखेंगे व्हाट योर चाइल्ड नीड्स, आपका बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरत है टू सक्सीड के लिए, बाउंड्रीज, रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये वीडियो मैंने खासकर पेरेंट्स के लिए बनाया है। इसमें पेरेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज है। इस वीडियो को आप पेरेंट्स तक पहुँचाए, शेयर कीजिए, ताकि जो पेरेंट्स है, जो एजुकेटेड पेरेंट्स है या जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हम बोल सकते हैं, वीडियो
सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंग्रेज़ी में, यहाँ पर हम इंग्लिश में ज़्यादा बात नहीं करते, हम उर्दू में ही वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे की नीड्स क्या है जो उसको सक्सेस की तरफ ले जाता है। बाउंड्रीज, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेकिंग ग्रेट बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीज आर नॉट ऑब्स्टिकल्स, इंस्टेड दीज आर द लॉज गवर्निंग योर होम। द मेन बाउंड्रीज एसेंशियली कम डाउन टू 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स। उसमें है नंबर 1 रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड रेस्पेक्ट फॉर थिंग्स। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड रेस्पेक्ट फॉर द थिंग्स। तो इन चीज़ों के ज़रिए से और रूल्स कम फ्रॉम द बाउंड्रीज हु हैव क्रिएटेड। रूल्स आर मच मोर inclined to the followed if the children can see the return of doing go. Work out the consequences for rules not being obeyed and stick to them consistently right from the beginning. ये आपसे यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, आप मैं चाहता हूँ आप इसको देखो। उसके बाद है हम और एक स्लाइड पढ़ेंगे यहाँ पर बाउंड्रीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप देख सकते हैं बाउंड्रीज, रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या होता है। इफ़ योर चाइल्ड इज़ कंटिन्यूसली disobeying the rules, revive the rules. Do the rules you set around reasonable to your child? Do you make your child confused when one day you make your rules mandatory but the next day you don't? Keep it clear, keep it consistent. तो ये ज़रूरी है, हमें कंटिन्यूसली रखना है, कॉन्सिस्टेंट कंटिन्यूसली रखना है। कल्टिवेट सेंस। तो अगर आप बच्चे को चाहते हैं ना, आज उसने बोला आप खेल को नहीं जाना है, स्कूल के बाद आपको होमवर्क करना है, घर में बैठना है, ये मुझे करके दो, ये मैथमेटिक्स पढ़ो, टेबल याद करो, ज़बान याद करो, साइंस में कोई भी, मगर फिर एक दिन आपने किया उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स, तो दूसरे दिन अवॉइड किया, नहीं आपको फिर उसमें कंसिस्टेंसी दिखानी है। हाँ, कम करना है, स्लो मगर कंटिन्यूसली। Cultivate sense of responsibility in your children. Parents nowadays use to raise children to be a little princes and princesses. Sometimes it is great to check how much you are doing for your children. कितना आप करते हो your children, which may be preventing them to develop their independence. It is a great to ensure that they have their own responsibilities in your family. Home is their best training platform. Once they get used to it, जब इसका वो इस्तेमाल करना, they will grow to be more responsible in different aspects of life. ये वाला जो स्लाइड है इम्पॉर्टेंट है, आप इसको घर में पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ये चीज़ें अपने बच्चों पे इस इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद है और है अ जर्नी ऑफ सेल्फ एजुकेशन एंड सक्सेस। A journey of self-education and success. Self-education करनी है। One of the most powerful tools in nurturing a child striving for success is to create a desire to learn or explore knowledge. उसमें ये चीज़ें आपको डेवलप करनी है, ये चीज़ें आप उसको, do you need a book for your kids? तो do you need, अब यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर आपको this can be done with just a regular visit to your local library. Perhaps make it weekly family activity. During the visit, discover what are the topics that interest your child and encourage them to find books related to their interests to explore them further. No doubt, school teachers do a great job by teaching our children. However, successful children have parents who are willing to spend time in providing the children the big why and how questions that a teacher of a large group may not be able to do when they are old enough. Google obviously is a great web search tool to fulfill their curiosity. तो ये important वाला ये जो है आप अपने बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हो, उनमें एक्सप्लोर नॉलेज लर्न क्रिएट करने के, सेल्फ एजुकेशन के जो चीज़ें हैं, बुक्स लाने हैं बच्चों के लिए, उनको आदत डालना है डेली किताबें पढ़ना, जो मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ। उसके बाद अब देखो यहाँ से है आपको कुछ पावर मॉडल्स बनाने हैं बच्चों के लिए। द पावर ऑफ द रोल मॉडल, जैसे यहाँ पर पेरेंट है, अपने बच्चे को साथ लेकर है, एक्टिविटी करता है, प्ले करता है, तो इसी तरह से फाइंड पीपल, उसमें बोलते हैं पावर ऑफ रोल मॉडल्स। फाइंड पीपल अराउंड यू दैट हैव कंपेरेबल इंटरेस्ट एज योर चिल्ड्रन एंड एनकरेज योर चिल्ड्रन टू कनेक्ट विद दीज पीपल। यू मे नॉट हैव एनी सेंस ऑफ क्रिएटिविटी बट योर किड्स मे लव टू ड्रॉ। लेट योर चाइल्ड पार्टिसिपेट इन ड्राइंग क्लासेस टू unleash their talent. It also causes them to take their interest further and see if it is something they feel worth enhancing. To be honest, most successful adults are no accidents. It is the accumulated work of the parenting, education, the time that creates someone who wants to make the best of them. One of the best flow-on effects of waiting to have a successful child is you learn along with the way too, and should you become a little more successful as well. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, पावर ऑफ द रोल मॉडल को इस्तेमाल करना है।
उसमें है अब सी यहाँ से देखो हमें क्या करना है इन बच्चों के लिए। देखो इनमें हमें आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों में हमें ये चीज़ें इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स, इट इज़ अ वाइटल टू गिव आवर चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है टू फाइंड व्हाट दे आर गुड एट, सो दे कैन पिक व्हाट they can focus on. But if there is a one aspect of skills which is very important to your child, no matter what field they involve, which is undeniably deniably the social skill. In order for children to succeed, they should have the ability to work with a wide variety of individuals, have good people management leadership abilities, to be able to distinguish an issue, and to likewise have a thought how they can solve it. Having great social skills can help build the resourcefulness of your children and subsequently turn them to be better problem solvers. अब सी ये इम्पॉर्टेंट है, हैविंग ग्रेट सोशल स्किल्स। आप बच्चों में सोशल स्किल्स डेवलप कीजिए, कैन इज हेल्प बिल्ड देयर रिसोर्सफुलनेस ऑफ योर चिल्ड्रन एंड सब्सिक्वेंटली टर्न देम टू बी बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो इससे इन बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हो सकती है। उसमें है वाइज फाइनेंशियल प्लान, आपको वाइज अच्छी तरीके से वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग encourages wise spending and saving for the future. Learning smart ways of managing money can profoundly affect a young child's life. The money related lessons children learn today will last well into adulthood. Begin little, give your children some allowance as their rewards of their contribution to the household. You can also give them pocket money that has no job attached to it as well, as if you like. This can be an awesome chance to demonstrate to your child is the nuts and bolts of gaining, spending and saving. Parents can utilize this opportunity to share with the children the difference between their needs and their wants in order to help children to avoid over spending on goods उसमें है अंडर देयर वांट्स कैटेगरीज। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। वाइज प्लानिंग होनी करनी चाहिए आपको बच्चों के लिए, उनमें वो चीज़ डेवलप करनी है वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग। वाइज इसमें है और एक है इसमें वाइज प्लानिंग है। शो किड्स टू कंसिस्टेंटली शॉप विथ शॉपिंग लिस्ट helps children understand how preparations can avoid unnecessary spending. Besides conveying the ideas to kids that the selection of goods during their shopping should be based on the quality versus cost factor instead of purely looking at the brand. Sharing with your child the ideas of investing their money is important. This idea can be shared once they grow to be more mature. Sharing with your child that investment can make money grow faster rather than just purely saving the money in the bank. Get your children a set of cash flow investing game developed by the renowned entrepreneur and motivational speaker. बहुत सारे हैं हमारे पास, वहाँ गूगल पे आप जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, उन बच्चों को वो चीज़ें दिखा सकते हो। उसमें है वाइज प्लानिंग में क्या हो सकता है, allow your children to involve the process of running a business such as being a seller at the food fair stall in the charitable event. This is an effective way for children to learn how to set and achieve sales targets, understand the profit and cost, and further create fundamental understanding about mathematics. इसमें है providing your child a good education in money is one of the key preparatory steps to success. ये वाला जो है स्टेप ये सब ये इम्पोर्टेंट है। The ultimate key to your child success जो है, अब देख सकते हैं यहाँ पर the ultimate key to your child's success is, have you ever pondered what makes a certain individual as a good competitor or a good businessman, or why does a child with the most talent in a group not become the star player? What is the difference? Is the mental strength or popularity known as grift? Research is starting to uncover that our mental durability or grit has a more essential impact than whatever else was achieving our goals in health, business and life. You have probably heard the word grit said a few times in the present years concerning raising child who proceed to fulfill their potential. Grit.
अब है अल्टीमेट की एज पर द साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था एंग्लिया दुकवर्थ, द की टू एक्सेप्शनल अकम्पलिशमेंट इज नॉट ऑल अबाउट एबिलिटी, रादर इट इज़ ए यूनिक मिक्स ऑफ प्रिजर्व, उसको बोलते हैं परसिवेरेंस एंड एंथुसिज्म दैट शी कॉल्स ग्रिट। हाउ डू यू हेल्प योर चाइल्ड यूटिलाइज ग्रिट इन देयर लाइफ? First of all, you help your child to discover a patient means or conceivably or a connection with an activity. One of the traits of creative people is that they are particularly inspired to look for satisfaction through centered engagement and a feeling of important reason. उसमें है आप देख सकते हो, so allow a child to find their own specific excitement is crucial in the long term. ये वाला जो है पैराग्राफ ये इम्पोर्टेंट है। उसके है the thought is to educate your child to concentrate on something and buckle down. If childs are motivated to improve at something they are interested in, then the struggle will have no effect at all and accomplishment will be its own particular reward. Besides, it is vital to educate your child not to give up easily. Give them a chance to confront their fear of disappointment. Make your child realize they may be facing some negative experiences and disappointments in life. Without that, they will not be sufficiently ready to start aiming for their goals. It is a fundamental to train your kids that disappointment is not the end. Disappointment is not the end. अब है यहाँ पर क्या निकलता है इससे, यहाँ पर नो मोर यील्डिंग, नो मोर नेगिंग और लूजिंग कंट्रोल, ज्वाइन पॉजिटिव पेरेंटिंग सोल्यूशन। अब यहाँ पर है कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन है यू केम इन टू पेरेंटिंग विद जीरो नॉलेज, यू आर पॉलिशिंग पार्ट्स ऑफ योर आइडेंटिटी एज यू रेज योर चाइल्ड. By parenting, you are developing and growing into a new person. However, your child is not destined to repeat your own personal mistakes. They are destined to make their own. You may not have wanted to look at it that way, but the mistake did happen. So you started to think possible ways to correct your child's mistakes. But trust yourself. You have the potential to raise your child successfully. It is important to learn first what your child needs and what his abilities are. And at that point, use the strength of the love you feel for him to guide him towards his goal. Happy. तो यहाँ पर हम इसमें इन बच्चों में ये चीज़ें पैदा कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.